औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सैटरडे टेस्ट फुल कोर्स जो हुआ है उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर एमसीक्यूज में दिया हुआ है अ वायरस इज मेड ऑफ। वायरस की कंपोजिशन से बात हुई है, तो वायरस किस चीज से बनता है? वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है। प्रोटीन में कैप्सिड होता है जो कि कैप्सोमायर से बनता है, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में करेक्ट ऑप्शन है ए। सेकंड दिया है अ प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट इंक्लूड्स द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड, सो इसको कैप्सिड्स कहा जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैप्सोमायर। कैप्सोमायर चूंकि कैप्सिड की सब यूनिट है, सो इट इज एन इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द कैप्सिड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ दिया है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वायरसेस डीएनए और आरएनए, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ द शेप ऑफ द टीएमई इज, टीएमई टोबैको मोज़ेक वायरस की बात हुई है तो उसका शेप जो है वो रॉड शेप है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स दिया है वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड, इनको बैक्टीरियोफेज कहेंगे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेवन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको एनाबॉलिक पाथवे कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिक जो है वो हमारे पास सिंपल सब्सटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, ऑप्शन इज करेक्ट। एट विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर देखा जाए सो ऑप्शन बी जो है द हाइड्रेटेड, द जनरल फार्मूला ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट इज CH2O-. सो ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए नहीं है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स को फॉलो नहीं करता, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डिफरेंट सैकराइड्स। तो सैकराइड्स में जो ऑप्शन बी दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द पॉलीसैकराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीसैकराइड जो है वो टेस्टलेस होते हैं, तो इस वजह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 दिया है पॉलीसैकराइड्स आर फाउंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और दो अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर पॉलीसैकराइड इन प्लांट। तो सेलुलोज जो है वो उसकी सेल वाल में पाया जाता है, इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 12 विच ऑफ दीज एग्जांपल ऑफ सिंपल शुगर। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रक्टोज हमारे पास मोनोसैकराइड है, ये सिंपल शुगर हुआ। तो इनमें कुछ है वो डाइसैकराइड है और कुछ पॉलीसैकराइड है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड। मसल सेल्स में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच स्टोर कैल्शियम आयन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग इन पैकेजिंग। जब भी पैकेजिंग का टर्म आ जाए या मॉडिफिकेशंस का टर्म आता है तो जाहिर बात है वो गाल्जी बॉडीज का काम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 द सेल ऑर्गेनेल इज डज नॉट कंटेन डीएनए, डीएनए लाइसोसोम में नहीं होती, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 the organelle is serving as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell, so Golgi apparatus, option D is correct। 17 a large central vacuole is the characteristics of which cell type, so ये plant cells की property है, so option B is correct। 18 which of these describe the typical shape of animal cell compared to the plant cell। आपको पता होना चाहिए कि plant cell में चूंकि सेल वाल होता है तो इसका एक फिक्स शेप होता है, so option B is correct। Animal cells are irregular rounded while plant cells are rectangular, so option B is correct। 19 the myelin sheet is derived from Schwann cells से बनते हैं, so option C is correct। 20 nacelles granules are found in the nerve cells में पाए जाते हैं, so option C is correct। 21 a nerve impulse jumps from one to another during saltatory, so saltatory jumping form में जो मूवमेंट होती है so node of Reinwehr की बात हो रही है, so option C is correct। 22 पे आते हैं, MCQ पे है dash or the nervous neurons carrying impulses away from the central nervous system। तो वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन का काम है, इसको इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, इफेरेंट नर्व भी कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एसोसिएटेड विद द जॉइंट्स, जॉइंट्स के साथ अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स कॉल्ड अर्थराइटिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 पे आते हैं विच ऑफ दिस इज हाईएस्ट परमेबिलिटी इन द रेस्टिंग नर्व सेल्स। सो रेस्टिंग न्यूरॉन जब रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो याद रखें यहाँ पे पोटाशियम आयंस के लिए परमेबिलिटी होती है, सो पोटाशियम आयंस जो है इसकी लीकेज भी हो रही है।
So option C is correct. 25. The nature of the most enzyme in the biz described is protein in nature. So option C is correct. 26. What is the primary function of an enzyme in a biological reaction? इसका बेसिक काम है decrease the activation energy. So option B is correct. 27. What is specific region on enzyme where the substrate binds to active site पे bind होता है? So option C is correct. 28. Enzymes are known for their high specificity. What does this mean? इसका मतलब ये कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट जो है उसके एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है. सो दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. सो ऑप्शन सी, एन एंजाइम विल टिपिकली ओनली बाइंड टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंजाइम्स? सो दे आर कंज्यूम इन अ रिएक्शन. वो कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन में यूज होते, कंज्यूम नहीं होते. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 30. अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इफेक्ट इन एंजाइम बाय, वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है तो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के साथ अटैच होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 31. इन Lamarck's view, the key of the organic evolution that each progeny character acquired by parental generation are inherited. So option B is correct. 32. This cartilage is present at the joints of the long bones. Hyaline पाया जाता है. So option C is correct. 33. This is the most popular example of Lamarck use in this use की उन्होंने बात की थी python snakes और giraffe. So option D is correct. 34. The idea of use and disuse of organ was given by the Lamarck. So option A is correct. 35. Who stated that theory organ in use will develop and if not used will weaken into turn vestigial? So ये Lamarck का idea था, use and disuse. Option D is correct. This was the name of the ship in which Darwin sailed around the world. So HMS Beagle. Option B is correct. 37. The seminiferous tubule of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of cells of Sertoli पाए जाते हैं जो कि inhibin productions करते हैं. So option B is correct. 38. These cells of the testis secrete testosterone. Option C, cells of the Leydig. इसको interstitial cells भी कहते हैं. So C is correct. 39. Which of these is an excessive reproductive gland in a male mammals? Prostate gland यहाँ पे दिया है. So option B is correct. 40. Another name for bulbourethral glands जो इसको Cowper's gland भी कहा जाता है. So option D is correct. 41. Which type of muscle is found in the walls of the stomach and intestine and is involuntary? Smooth muscles यहाँ पे पाए जाते हैं. Option C is correct. 42. Which type of muscle is created in under conscious control? Skeletal muscle जो है वो conscious control है, voluntary inaction है. So option B is correct. 43. Which of the following is involuntary striated muscle is responsible for pumping of the blood? Cardiac muscle जो है वो involuntary है लेकिन striated या stripped muscle है. So option C is correct. 44. Which of the following disease is associated with the joints? Arthritis. So option C is correct. 45. What is the most abundant muscle type in the body? Skeletal muscle सबसे ज़्यादा है, 50% body weight. Option C is correct. 46. Which of the following characteristics of the pea plant was not used by the Mendel in his experiment? Mendel जो है इसमें correct option है pod length की उसने बात नहीं की. तो option C is correct. 47. Mendel took 7 contrasting 7 character को study किया था. So option B is correct. 48. What according to Mendel was responsible for inheritance of specific trait? उन्होंने factor का term use किया था जो कि आजकल हम इसको genes कहते हैं. So option B is correct. 49. Which of the following is recessive trait in a pea plant? Dwarf stem height जो है वो recessive character है. So option A is correct. बाकी सारे dominant है. 50. If you were to sample garden pea plant in a Mendel garden, which of the following statement would hold? तो जाहिर बात है राउंड सीड्स वर मोर एबंडेंट देन द रेंकल सीड्स क्योंकि 3:1 से जो है वो आती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 51. व्हाट वाज द मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज्ड बाय द मेंडल टू गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? गार्डन पी पे उन्होंने काम किया था, इसको फील्ड पी भी कहा जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 52. Which of the following is the dominant character in a pea plant? Tall stem height. Option A is correct. 53. The location of the neurocentric activity of the heart is a medulla oblongata. इसको कंट्रोल करता है. So option D is correct. 54. The reason why tricuspid and bicuspid valves are closed. काम क्या है ताकि backward flow ना हो. So attempt backward flow of the blood into atria. So option D is correct. 55. The reason why the sinoatrial node is a natural pacemaker. क्योंकि इसका बेसिक काम क्या है? Generate the highest number of the action potential in conducting systems. Option D is correct.
56 द ट्राइकस्पिड वॉल इज प्रेजेंट इन ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पे पाया जाता है राइट एट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि वो पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है 58 पे आते हैं पेस मेकर क्या है दैट्स अ साइन आर्टरियल नोड है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट 59 साइन आर्टरियल नोड इज लोकेटेड इन द अपर लेटरल वॉल ऑफ द right atrium so option A is correct 60 blood enter into the heart because of the atrial relaxation option A is correct 61 the opening of the right atrium into the right ventricle is guarded by the tricuspid valve so option B is correct 62 what are the two main types of specific immune response एक है cell mediated response और एक है antibody mediated response so option C is correct 63 which type of immune cell produce antibodies B lymphocytes का काम है so option D is correct 64 which of the following system protect our body against disease causing microbes immune system option A is correct 65 B cell and T cells are the two type of cells involved in acquired immunity so option D is correct 66 the branch of biology in which study about immune system is called immunology so option C is correct 67 which of the following cell is involved in cell mediated immunity T cells का काम है so option A is correct 68 which of the following cell is involved in the humoral immunity so B cells का काम है so option B is correct where does gaseous exchange take place in the lungs alveoli में होती है so option C is correct 70 what are the vent pipe commonly called इसको trachea कहते हैं so option D is correct 71 which of the following is the major muscles of the respiratory system diaphragm so option A is correct 72 which cartilage is present in the joint of the long bones hyaline पाया जाता है so option C is correct 73 पे आते हैं which what is the process of inhalation oxygen and exhalation carbon dioxide is called इसको respiration कहते हैं option B is correct 74 which of these is a chronic respiratory disorder causing by smoking emphysema जो है so option B is correct in एक जो given है 75 पे आते हैं the tiny air sacs in the lungs are called alveoli कहते हैं option B is correct 76 what is the primary function of the bile in the digestive system emulsification of fats करता है so option B is correct 77 where does the majority of the nutrient absorption occur small intestine में होती है so option C is correct what is term for the thrift of capillaries within the renal corpuscle that is responsible for filtering the blood glomerulus में होता है so option B is correct 79 what is the primary nitrogenous waste product excreted in the human urine so urea excrete करते हैं इसको ureotelic कहते हैं इसको option C is correct 80 what is probe क्या चीज है so that is either purified or synthesized single stranded DNA ताकि हम जो sample है उसमें से unknown sequence को ढूंढ सकें so option D is correct last time sequence है what is a probe labeled so why is probe labeled इसकी क्यों उसको label करते हैं so improve location identification ताकि उसका आसानी से ढूंढा जा सके so option C is correct wish you best of luck see you next time